अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। मैंने एक मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और जानने वाले हैं कि वो रिसर्च सीखना चाहते हैं, लेकिन अ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उन लोगों को इंडिविजुअली हर किसी बंदे को अलहदा टाइम दे सकूँ। तो इसी मसले के हल के लिए मैंने एक चैनल बनाए है और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स पे मैंने उसके लिए अकाउंट्स बनवाए हैं, दानिश रिसर्च लैब के नाम से। तो इसी में हम सोशल साइंस रिसर्च मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे और हो सके अगर किसी ने कुछ सीखा, कुछ समझा, कुछ नया एक्सपीरियंस किया तो वो ख़ुद भी लाइक करे, शेयर करे और अपने और दोस्तों को भी बताए। तो हम शुरू करते हैं कि सोशल साइंस रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। बेसिकली research, social science research and research methodology, these are the interlinked terms. Before going to understand the research methodology or social science research methodology, uh, we first have to know the historical development of research. So, origin of research. From the origin of research, we will came to know that how the research has been evolved from the simple or traditional stage to now called modern stage. तो इसी हवाले से हम शुरू करते हैं कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च क्या है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च को समझने के बाद आप लोग जान जाएंगे कि रिसर्च क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, सोशल साइंस रिसर्च मेथड क्या है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि अगस्ट कॉम्टे या अगस्ट कॉम्ट born in 1798 and died in 1857. हम इन लोगों की हम बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, रिसर्च या वटेवर। हम उस के डिटेल में नहीं जाएंगे। यही हम रिसर्च के हवाले से इन लोगों ने जितने भी फ़िलासफ़ी को या साइंस को टच किया है उसी को हम रिसर्च के हवाले से ब्रीफ इसको टच कर। तो स्टार्ट करते हैं कि बिफोर अगस्ट कॉम्ट या बिफोर द पॉजिटिव फिलॉसफी, science was considered as a whole as a science. There was no proper division for social science or natural science or life science and so on. In order to make the sociological knowledge as a scientific knowledge, he for the first time introduced a law which is called law of three stages. Law of three stages. Law of three stages. The first one is mid theological stage. It is the first step in which everything will be explained, explored on the basis of religion. और इसको हम सादा अल्फाजों में अगर हम कह सके कि जितने भी नॉलेज थे, जितने भी ह्यूमन सोशल फिनोमेनास थे, ह्यूमन फिनोमेनास थे, वो हम लोग मज़हब या दीन इसी के हवाले से हम इसी को मद्देनज़र रख के उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसका ओरिजिन दीन से या ये थियोलॉजी से ओरिजिनेट हुआ है। इसी के बाद टाइम गुज़रता गया और लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगे। तो लोगों के शेयर्ड एक्सपीरियंस या कलेक्टिव विजडम जिसको भी कहा जा सकता है कि शेयर्ड एक्सपीरियंस और कलेक्टिव विजडम को
इस थियोलॉजिकल स्टेज के साथ मिलाकर एक और स्टेज ने जन्म लिया जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेटाफिजिकल स्टेज है, मेटाफिजिकल stage. From metaphysical stage, people came bit scientific, bit theological. कहने का मतलब ये है कि लोग 50% थियोलॉजी पे बिलीव करते थे, 50% साइंस पे या शेयर्ड एक्सपीरियंस पे या कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करने लगे। वक्त गुजरता गया, इसी के बाद उसने एक और स्टेज के बारे में कहा कि ये इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज इन 3 स्टेजेस के बिना हुआ है। जैसा कि थियोलॉजिकल स्टेज डिस्कस किया हमने, मेटाफिजिकल को भी हमने थोड़ा सा टच किया कि इट इज़ द ब्रिज बिटवीन द साइंस एंड रिलीजन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड metaphysics in between. So that's why the third step is the scientific stage. Scientific stage or positivism. In positivism, he used the natural sciences laws for explaining human behavior. Like first he classified the sciences in order to predict that sociology is also a science or social sciences. So he classified the science into 6 categories or 6 disciplines we can call physics, chemistry, mathematics, astronomy, and the last one that is called social physics, now called social science, and so on. It's the very broad discipline at that time. So from there, through positivistic philosophy, by using the laws of natural science, we can do research, or we can explore the human phenomena which are related to human behavior or behavioral sciences. So these are the those rules, methods and procedures whom we adopt in natural science and could be applied to social science there, and he called them the positive philosophy. From there, the origin of scientific knowledge became evolved. After that, the another scientist of that era, they are closely, their date of birth is 1796, 1798. They are the very close to each other. So it is the Adolf Kittler. The Kittler came and he further explored the human behavior in the context of criminology, and he introduced the BMI, body mass index, the body mass divided by height square, which could be called BMI, a body mass index. On the other hand, he in criminological sense, criminal context, he predict by using statistics, applied pair statistic to predict a person whether he is criminal or not, on the basis of some sort of qualities, familial background, unemployment, and gender, age, and these he quantify these variables and predict his criminal behavior or his deviant behavior. From that, there was यही तक कीटले तक यही रिसर्च का कोई फॉर्मल मेथडोलॉजी या कोई फॉर्मल मेथड्स या प्रोटोकॉल मौजूद नहीं था, लेकिन किसी भी साइंस का हम यही कहीं भी फिट हो सकता है, जो भी मेथड हम उसी को उठवा लेते और वहीं पे इम्प्लीमेंट करते। तो इसी के बाद 1858 में एमानुएल डर्खीम आई। एमानुएल डर्खीम पैदा हुआ फ्रॉम 1858 टू डाइड इन 1917
There he has a lot of contribution in the field of social sciences and sociology. But here we will discuss related to research and social science research methodology. That is the rule of sociological method. Rules of sociological method. Rules of sociological method, 1895. He for the first time wrote a proper and a formal research methodology in which he could explain the human behavior. By using these principles and rules, we could explain the human behavior in a better manner. So later on in a theory of in the study of suicide in 1897, he applied social statistics. There that men commit more suicide as compared to women, and so on, and so many other factors. He quantify them on the basis of social statistics. From that, he provide a proper foundation for research and social science research methodology. हम इसी को अगर हम इसी के बारे में आगे आने वाली वीडियो में या किसी दूसरे लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे. हम अगर अब इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इसको ये सपोर्टिव टॉपिक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च. आप लोगों को जानना चाहिए कि रिसर्च की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन किसने किया और कैसे हुआ और कहाँ से हुआ. ये आप लोगों के लिए एक सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन है. असल में हमारी जो सोशल साइंस रिसर्च है यही से शुरू होता है और आगे आगे चले जाते हैं. रिसर्च दिस टर्म ये दो लफ्ज़ों से बना है, जैसे कि री मीन्स अगेन एंड अगेन, बार बार, जिसको हम कह सकते हैं कि बार बार, अगेन एंड अगेन, ओवर अगेन, न्यू, समथिंग न्यू, या मतलब बार बार. और सर्च टू फाइंड आउट समथिंग, तलाश करना. जैसे कि हम उर्दू में कह सकते हैं कि मैं न ही इंग्लिश का नेटिव स्पीकर हूँ न उर्दू का नेटिव स्पीकर हूँ, लेकिन दोनों को मिक्स करके हम काम चला लेंगे. ठीक है. तो री एंड सर्च, फ्रॉम री एंड सर्च, रिसर्च का जो टर्म है ये बना है, और इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बार बार सर्च करना, बार बार तलाश करना, बार बार इन्वेस्टिगेट करना. सो इन ब्रीफ डिफिनीशन, रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक इंक्वायरी. रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, एक साइंटिफिक इंक्वायरी है. ये एक डिफिनीशन है. दूसरी डिफिनीशन ये भी है कि रिसर्च इज़ द scientific and systematic solution to any problem. We can also say that to provide a scientific and a systematic solution to any existing problem, we do research, or we do research to provide a systematic and a scientific solution to any existing prevailing problem. यही रेडमैन और मोरे ने इसको डिफ़ाइन किया है. यही इसी को थोड़ा एलाबोरेट करके रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज. ये और ये तकरीबन एक ही चीज़ है कि रिसर्च जो है एक सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट है, जो इसको तरतीब दिया गया हो, उसको जो लॉजिकल सीक्वेंस है, जो लॉजिकल सीक्वेंस है उसका, और जो सिस्टमेटिक मैनर में अडॉप्ट किया है, ये एक ऐसी एफर्ट है. और जो हम जिसका जो प्रोडक्ट है वो न्यू नॉलेज है, या इट्स समथिंग न्यू, एनीथिंग न्यू. तो इसी को हम मद्देनज़र रख के हम ये भी कह सकते हैं कि what is research. Now we can come to research methodology. Research methodology is the set of methods, rules, regulations, procedures, techniques,
in order to formulate, in order to analyze, in order to generate, in order to solve, in order to conduct a particular research study is called research methodology. ये इसका जो है एक comprehensive definition है, और social science research methodology or social research methodology, anything we discuss or anything we do research related to social sciences, then it become social science research methodology. आगे चलते बढ़ते कि characteristics of good research. एक अच्छे रिसर्च में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, क्या खसूसियात होना चाहिए, या what a good research possess. A good research must possess these following qualities or characteristics. That will be control. इसका कहने का मतलब ये कि control means the influence of external factors will be minimum. We couldn't control any research activity, most especially related to social sciences or human behavior, because it is unpredictable and it changes from one place to another. It's a variable in nature, dynamic in nature. So we couldn't make control. We could not fully take control over them. On the other hand, it's the natural sciences. In natural sciences, we do research or we do experiment in a controlled setting, that is the laboratory, but our laboratory is a society. The second thing is rigorous. Rigorous means relevant and justified. ये भी एक a good research must be controlled. A good research must be rigorous. A good research must be systematic, will follow the logical sequence from introduction, from literature review, or from identification for consulting the existing resources or secondary data. The third step is the third logical step or the logical sequence is the methodology. What should be adopted or what should be followed in a proper method, design, or techniques or procedure. Fourth one is result discussion section or data analysis section. Then it comes result and discussion. From result and discussion, then we will provide a conclusion, a report, recommendation, references, etc. We will discuss them in some coming video or coming lecture in very detail. But here, start from introduction and in conclusion, a report. This is the logical step, and from that conclusion it will give rise to another problem, and this cyclical process will go on and go on. The fourth one is it will be valid and verifiable. A good research must be valid and verifiable. From valid and verifiable we means correct and true. A good research must be empirical. From empirical we means it will be based on some sort of data. Gathered data or primary data or secondary data. Primary and secondary data we will discuss in the coming lecture, but from the primary or secondary it is called evidence. A good research must be evidence based. It will be empirical. A good research must be critical. Critical means here foolproof and free from drawbacks. It will be proofread, it will be cross check from each and every aspect. The seventh one is a good research must be ethical, must be done in an ethical setting. There are some research ethics we will discuss in the upcoming lectures in detail, putting in consideration and taking in consideration those ethics we will do research, and that research will be considered a good research which is done under the ethical domain of any research.
The eighth one is logical. From logical we mean good research must be reasonable and argumentative. From reasonable we can provide reasons, justification. From arguments means we can argue about any phenomena or anything. From that argument it will give rise to another problem, and that will lead to another research study. The ninth one, a good research must be analytical. From analytical we means it will be well organized, more precise, more accurate. And that last one is objective, unbiased. It will be objective. From objective here we mean that a good research, the result of good research must be uniform for each and everyone. It will not be a subjective or my personal or my biased explanation. It will be objective and unbiased. The fourth one we are discussing here is why do we do research. एक हमारे आप लोगों के जहन में ही एक सवाल आएगा कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, या वाई डू वी डू रिसर्च, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, या व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसर्च. तो रिसर्च पहली बात तो ये है कि ये रिसर्च ओरिएंटेड जो भी चीज़ है और उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है, जो उसको ऑथेंटिसिटी, इसकी ऑथेंटिसिटी हो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लेमैन अप्रोच और लेमैन या फैक्टिशियस नॉलेज. तो we do research because to produce valid and authentic knowledge. We do research because in order to develop verified information and facts. We do research to produce or improve the methodology, existing methodology. Like these are the methodologies these people use: Comte, Kittle and Durkheim. These use different methodologies to explore human phenomena or human behavior. We do research in order to develop something new. It's the addition of knowledge, is the innovation and discoveries of something new. We make discoveries and innovations. That's why we do research. In order to make discoveries and innovations, we do research. The last one is to add knowledge to the existing knowledge. We modify the existing body of knowledge and add something new to that body of knowledge. That's why we do research. Wish you all the best, and see you soon in the next coming video. And please do subscribe to my channel, Danish Research Lab, and wish you all the best.